Hello students, let's start chapter 10, the last chapter of the book from Honeysuckle Book, The Banyan Tree. The author narrates an incident of a fight between a mongoose and a cobra that he witnessed as a young boy while sitting under a banyan tree at his grandparents' house. So the very first page, I have just summarized it. The fight of the cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India, and the outcome is largely the same. The mongoose is not immune to the venomous bite but is faster and quicker in motion than the snake. The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike. But the quick moving mongoose jumps out of reach and comes at the snake from another direction. Before the snake can get it into the striking position again, this constant movement tires and discourages the snake, and the mongoose is finally able to leap in close and bury its teeth in the snake's neck, usually severing the joints of its vertebrae. जैसा कि हमने 9th चैप्टर में भी पढ़ा था mongoose और snake के बारे में कि mongoose snake को इतना provoke करता है, पहले उसकी tail पे bite करेगा कि snake को लगेगा कि मैं mongoose को मारूं, और वो इतना प्रोवोक कर देगा जब तक कि स्नेक पूरी तरह से थक नहीं जाएगा, टायर्ड नहीं हो जाएगा, और जब स्नेक टायर्ड हो जाएगा द mongoose विल बाइट ऑन इट्स हेड और इट्स नेक, जिससे स्नेक बहुत इजीली डेड हो जाता है. नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर विद द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पार्ट 1. Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine. Magnificent means marvelous, wonderful, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. So let's see what does this means. The author was at its grandparents' house. Author कहाँ पर था? अपने grandparent के यहाँ पे. And he claimed that the banyan tree belonged to him, though the house owner were his grandparents. अब author क्या बता रहा है कि ये जो banyan tree है वो किसका हो गया है? वो author का हो गया है, क्योंकि अब उनके जो दादाजी हैं, जो उनके grandparents हैं, वो उस घर के ओनर हैं और उनकी एज कितनी हो चुकी है? 65. अब वो उस ट्री पर चढ़ नहीं सकते. So this tree is totally belongs to the author. And who is the author of this chapter? The Ruskin Bond. Okay. Now, next paragraph, paragraph number 2. Its spreading branches, which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. Among them were squirrels and snails and butterflies. The tree was older than the house, older than grandfather, as old as Dehradun itself. I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy. Spy means watch secretly. चुपचाप नजर रखना on the word below. Let's see the meaning of this paragraph. The author felt very happy and joyful to see the opened out branches of the tree. ऑथर को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश हो रहा था वो उसकी इतनी फैली हुई ब्रांचेस को देखकर, which used to hang from the tree in bunches to the ground. These roots had formed loops, क्योंकि जितना पुराना banyan tree हो जाता है उसकी roots उतनी strong हो जाती है, उतनी curled हो जाती हैं. Various animals like squirrels, snails and butterflies were living in the turns of those loops. यानी उस loops के अंदर जो अलग अलग एनिमल्स हैं, जैसे स्क्विरल्स हो गए, स्नेल्स हो गए, बटरफ्लाइज, वो वहाँ पर रहते थे. द ट्री वॉज वेरी ओल्ड. ये ट्री बहुत पुराना था. बैनियन ट्री बहुत पुराने होते हैं. ओल्डर देन द हाउस, यानी जिस घर में उसके ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे थे वो उस घर से भी पुराना था. एंड ग्रैंडफादर, यानी उसके ग्रैंडफादर अगर 65 ईयर्स के हैं तो वो बैनियन ट्री उसके ग्रैंडफादर से भी बूढ़ा था. इट वॉज एज ओल्ड एज द सिटी देहरादून, यानी वो इतना पुराना था जितनी वो सिटी, क्या कौन सी सिटी है? देहरादून. नेक्स्ट पैराग्राफ.
My first friend was a small grey squirrel, arching his back and sniffing into the air. He seemed at first to resent. Resent means dislike my invasion of his privacy. But when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly. And when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. Morsels means small pieces of food. Now let's see what does it mean. फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑथर बिकेम फ्रेंड्स विद द स्मॉल स्क्विरल. पहले ऑथर ने सबसे पहले अपना फ्रेंड किसको बनाया, एक छोटी सी स्क्विरल को. ही आर्क्ड हिज बैक एंड स्मेल्ड इनटू द एयर. इन द बिगनिंग ही डिड नॉट लाइक द ऑथर्स इन्वेजन इनटू हिज प्राइवेसी. शुरू शुरू में उसको वो ऑथर अच्छा नहीं लगता था, उसे ऐसा लगता था ये उसकी प्राइवेसी ख़त्म हो रही है. बट वेन रियलाइज दैट द ऑथर वॉज नॉट आर्म्ड विद एनीथिंग टू ऑफेंड हिम, ही बिकेम फ्रेंडली. लेकिन जब स्क्वेरल को ये बिलीव हो गया कि ऑथर के पास किसी तरह के कोई आर्म्स नहीं है, वो स्क्वेरल को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, तो उसने ऑथर से फ्रेंडशिप कर ली. सून द ऑथर स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम टिडबिट्स ऑफ फूड लाइक केक्स एंड बिस्किट्स. उसके बाद ऑथर को भी स्क्वेरल बहुत पसंद थी, तो वो उसका पेट भरने के लिए छोटा छोटा खाना ला कर देता था, कभी बिस्किट्स कभी केक्स. The squirrel started eating small morsels from his hands. और स्क्विरल ने वो छोटा छोटा फूड उस ऑथर के हाथ से खाना शुरू कर दिया था. The remaining paragraph is, before long he was delving. Delving means going deep into, गहरे में जाना. My pockets and helping himself to whatever he could find. He was a very young squirrel and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. So the remaining lines means, very soon the squirrel started digging into author's pockets. यानी वो author का जो pocket थी वो उसको खोजना शुरू करती थी कि उसको उसमें क्या मिलेगा. For whatever he could find. He was young squirrel and his kin must have thought him to be a fool for trusting a human. Next paragraph. In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, parrots, myna and crows squabbling. Squabbling means fighting over small things. यानी छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई होने को हम क्या बोलते हैं, squabbling. With one another. During the fig season. Fig seasons means जहाँ पर fig appeared होता है. Fig आपको मालूम है क्या होता है, ये एक तरह का ड्राई फ्रूट होता है. The banyan tree was the noisiest place in the garden. Okay, so now let's see what does it mean. In the spring season, the banyan tree used to be in full bloom. यानी spring season में ये banyan tree पूरी तरह से खिल जाता है. क्यों खिल जाता है? क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स इस पर आकर बैठते हैं, अपना घर बना लेते हैं इस पर, और इसमें इस पेड़ में से, सुनसान पेड़ में से खूब आवाज़ आती है, तो ये ब्लूम हो जाता है, खिल जाता है. इट इज़ यूज टू बी फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स. फिग्स क्या होता है, एक फ्रूट होता है. डिफरेंट बर्ड्स लाइक बुलबुल, पैरट्स, माइना एंड क्रोज यूज टू फाइट विद ईच अदर ओवर स्मॉल थिंग्स. यानी इसी पेड़ पर बैठकर ये डिफरेंट बर्ड्स जो हैं ये क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते हैं. देयर वॉइसेस टुगेदर यूज टू मेक द प्लेस नॉइसी इन द गार्डन इन द फिज सीजन. यानी जिस सीज़न में फिज ग्रो करते हैं उस सीज़न में ये पेड़ एकदम शोर शराबे वाला पेड़ बन जाता है, इसमें से खूब आवाज़ आती है. नेक्स्ट पैराग्राफ. Halfway up the tree, I had built a crude platform. Crude means raw. Where I would spend the afternoons when it was not too hot. I could read there propping myself up. Propping means leaning against. Against the tree with the cushion from the living room, Treasure Island, Huckleberry Finn, and the story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library. These lines means on the tree, the author had made a platform of primitive style. ऑथर ने क्या बनाया था, एक प्लेटफॉर्म बनाया था अपना, एक पुराने तरीके का, एक रॉ तरीके के प्रिमिटिव स्टाइल में अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया था. इन द आफ्टरनून यानी दोपहर के समय, व्हेन इट वाज नॉट वेरी हॉट, ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम देयर.
ही हैड पुट अ कुशन देयर, उसने क्या किया था, कुशन रखा था जो वो कहाँ से लेकर आया था, फ्रॉम द लिविंग रूम, एंड वॉज एबल टू रीड एट दिस प्लेस, ताकि उस कुशन को रख के आराम से उस पेड़ पे बैठ के वो अपनी रीडिंग कर सके. While leaning against the tree, he had set up a small tree library and the books that he read there were, वहाँ पर उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई थी जहाँ पर वो क्या पढ़ता था, बुक्स पढ़ता था. और कौन सी बुक्स पढ़ता था, ट्रेजर आइलैंड, हक्कलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉलिटल. Paragraph number 6. When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the word below. And on one particular afternoon, I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. So, see what does it means? कि जब poet पढ़ाई नहीं करता था, यानी उसको रीडिंग करने का मन नहीं करता था, वो पेड़ पर से कहाँ दिखता था, नीचे दिखता था. एंड एक पर्टिकुलर आफ्टरनून में उसने एक ग्रैंड स्टैंड व्यू मीन्स एक क्लियर व्यू देखा, बेस्ट पोजीशन थी जहाँ से वो क्या देख रहा था, क्लासिक ड्रामा देख रहा था. किसका, एक मॉन्गूस और कोबरा के बीच में. Paragraph number 7, part 2. The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. I was feeling drowsy. Drowsy means sleepy. Myself wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding. Gliding means move smoothly out of a clump of cactus. Clump means bunch. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. This paragraph means, because of the hot summer, गर्मियों की वजह से everyone was inside the house. The author was also feeling very sleepy and lazy. Rather, he was deciding to visit the pond to swim and Ramu and the buffaloes when he noticed a cobra coming out of a clump of cactus and a mongoose from the bushes. जब उन्होंने क्या देखा कि कोबरा कहाँ से आ रहा है, कैक्टस के बंच में से, और mongoose कहाँ से आ रहा था, bushes में से, यानी झाड़ियों पे से. The mongoose came out of the bushes and went straight to the cobra. और mongoose bushes में से निकलकर सीधे कहाँ गया, कोबरा के पास. Paragraph number 8. In the clearing beneath the banyan tree, in bright sunshine, they came face to face. The cobra knew only too well that the prey mongoose, 3 feet long, was a superb fighter, clever and aggressive. Aggressive means बहुत गुस्से में. But the cobra too was a skillful and experienced fighter. He could move swiftly and strike with the speed of light. And the sacs behind his long sharp fangs means long sharp teeth, were full of deadly poison. It was to be a battle of champions. This paragraph means both the cobra and the mongoose came before each other under the banyan tree. वो लोग दोनों कहाँ पर आए, बैनियन ट्री के नीचे. द कोबरा वॉज वेल अवेयर दैट द मोंगूज हैड सुपर्ब फाइटिंग स्किल्स. कोबरा को अच्छे से मालूम है कि जो मोंगूज होता है उसमें बहुत सुपर्ब फाइटिंग स्किल्स होते हैं. बट ही हिमसेल्फ वॉज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस्ड फाइटर. लेकिन कोबरा खुद भी क्या है, एक एक्सपीरियंस फाइटर है जो लड़ सकता है. एंड हैड डेडली पॉइजनस लॉन्ग शार्प टीथ. और कोबरा के पास कैसे होते हैं, डेडली यानी मार देने वाले लंबे शार्प टीथ होते हैं. दस इट वॉज अ बैटल बिटवीन 2 चैम्प्स, यानी ये बैटल किसके बीच में है, अब 2 चैंपियंस के बीच में, क्योंकि मोंगूस भी एक फाइटर है और कोबरा भी फाइटर है. पैराग्राफ, हिसिंग डेफिएंस मीन्स रिबेलियन, रेजिस्टेंस, और यू कैन से फॉर द प्रोटेक्शन, अपने प्रोटेक्शन के लिए साउंड निकालना, शोर मचाना. हिज फोक्ड टंग डार्टिंग इन एंड आउट. Darting means move quickly or suddenly. The cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood. The mongoose bushed his tail. The long hair on his spine stood up. The meaning of this paragraph, now creating a hissing sound in its defense. कौन क्रिएट कर रहा है हिसिंग साउंड, स्नेक क्रिएट कर रहा है अपने बचाव के लिए हिसिंग साउंड. जो साउंड होती है स्नेक की वो कैसी होती है, हिस,
इस तरह की साउंड होती है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, हिसिंग। मूविंग हिज टंग क्विकली इन एंड आउट, यानी अपनी टंग को जल्दी जल्दी अंदर और बाहर कर रहा था। द कोबरा रेज्ड इटसेल्फ फ्रॉम द ग्राउंड एंड स्प्रेड हिज हुड टू फाइट एन अटैक। कोबरा अपने आप को ज़मीन से ऊंचा उठा रहा था और अपने हुड को फैला रहा था ताकि वो क्या कर सके, फाइट कर सके और मंगूस पर अटैक कर सके। द मंगूस ऑल्सो शोड हिज रेडीनेस टू फाइट बाय ब्रशिंग हिज टेल एंड रेजिंग हिज हेयर। मंगूस ने भी अपने आप को क्या शो किया, दैट ही इज ऑल्सो रेडी फॉर द फाइट बाय ब्रशिंग हिज टेल, अपनी टेल को ब्रश करके और अपने हेयर को रेज करके। नेक्स्ट पैराग्राफ, दो द combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of two other spectators. Spectators means those who watch a show, games, etc. जो लोग देखने के लिए बैठते हैं उन्हें spectators बोलते हैं। One was a myna and the other was a jungle crow. They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. Outcome means result. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. Now, the meaning of this paragraph. Participants in the fight were not aware of the author's presence in the tree, but two spectators, a myna and a crow, were noticing clearly. यानी इस फाइट में दो पार्टिसिपेंट्स थे, मंगूस और स्नेक। उन दोनों में से एक को भी ये बात नहीं मालूम थी कि ऑथर उन्हें पेड़ पर बैठकर देख रहे हैं, लेकिन माइना और क्रो पार्टिसिपेंट्स को, मंगूस और स्नेक को क्लियरली वॉच कर पा रहे थे। They witnessed everything and was settled on the cactus to watch the result. और कैक्टस पे बैठ के वो उनको देख रहे थे और देख रहे थे कि फाइट कैसी चल रही है उन दोनों के बीच में। But they were not satisfied with just watching, rather they participated in the fight. और वो उन दोनों को देख कर ही सेटिस्फाइड नहीं थे, बल्कि क्रो और माइना दोनों ही इस फाइट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव। डिफेंसिव मीन्स प्रोटेक्टिव or defending, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move, but the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. Now it means the cobra was trying to spellbind the mongoose with his movements, but the mongoose was well aware of the power of its opponent. यानी कोबरा mongoose को बांध के रखना चाह रहा था अपने इस गेम में अपने मूवमेंट से, लेकिन mongoose को अच्छे से मालूम था कि उसका ओपोनेंट की कैसा है और उसकी पावर कैसी है। So he fixed his focus on attacking the cobra at a point just below the cobra's hood and started the attack. So उसने अपना फोकस कहाँ पे बना के रखा, कोबरा के हुड के नीचे, और उसने अटैक करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, मूविंग फॉरवर्ड क्विकली until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side. Immediately, the cobra struck. His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose, but the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. This paragraph means the mongoose made false quick movements very close to the cobra. यानी mongoose ने कोबरा के पास गलत गलत मूवमेंट्स, गलत और क्विक मूवमेंट्स किए। क्या करने के लिए, ऐसा क्यों किया, ताकि वो स्नेक को बेवकूफ़ बना सके। द कोबरा अटैक्ड एंड मूव्ड हिज हुड डाउन सो क्विकली दैट इट सीम्ड दैट मंगूस वुड नॉट बी सेफ्ड। कोबरा ने अटैक किया, अपना हुड बहुत क्लोजली मंगूस के नीचे लेकर आया, बहुत जल्दी लेकर आया, और ऐसा लग रहा था कि मंगूस अपने आप को बचा नहीं पाएगा। बट दिस क्रिएचर वॉज क्विक टू जंप एंड मूव ऑन वन साइड। लेकिन ये क्रिएचर मंगूस बहुत स्मार्ट है, उसने बहुत क्विक जंप किया। इट ऑल्सो बाइट द स्नेक ऑन इट्स बैक एंड अगेन मूव्ड अवे आउट ऑफ इट्स रीच। उसने क्या किया, मंगूस ने स्नेक को बाइट किया उसकी बैक पर और दोबारा से भाग गया
स्नेक की रीच से। नेक्स्ट पैराग्राफ, at the same moment that the cobra struck, the crow and the myna hurled themselves at him, only to collide heavily in midair. Shrieking insults at each other, they returned to the cactus plant. A few drops of blood glistened on the cobra's back. Glisten means shone. The meaning of this paragraph: the moment the cobra attacked, the crow and myna threw themselves at him to come into conflict. यानी जिस मोमेंट पे कोबरा ने अटैक किया, क्रो और माइना ने अपने आप को कोबरा पर फेंक दिया और वो भी लड़ाई में, कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। आफ्टर मेकिंग लाउड शॉर्ट नॉइजेज ऑफ अटैक, दे केम बैक टू द कैक्टस प्लांट। उन्होंने जाकर क्या किया था, छोटी छोटी शोर मचाने वाली खूब तेज तेज आवाज़ें निकाली और वापस से वो कैक्टस प्लांट पर आ गए। ड्रॉप्स ऑफ ब्लड वर शाइनिंग ऑन द कोबराज बैक, और कोबरा की पीठ पर ब्लड के ड्रॉप्स दिखाई दे रहे थे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, अगेन द mongoose sprang aside, jumped in and bit. Again the birds dived at the snake, bumped into each other instead and returned shrieking to the safety of the cactus. Now it means the cobra attacked but missed it. The mongoose again jumped aside. The birds again tried to attack the cobra but were collided with each other. यानी birds ने दोबारा से कोबरा पे अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन वो दोनों आपस में ही टकरा गए। So they came back to the cactus crying. तो इसलिए वो वापस कैक्टस प्लांट पर रोते हुए आ गए। Now paragraph number 15. The third round followed the same course as the first, but with one dramatic difference. The crow and the myna, still determined to take part in the proceedings, dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. Now this paragraph means, third time again the birds tried to attack the cobra in the same manner, but this time there was a change. They didn't collide with each other. अब क्या हुआ, तीसरी बार भी ये दोनों बर्ड्स क्या करने वाले थे, कोबरा पे अटैक करने वाले थे, उसी तरह से जैसा इन्होंने पहले किया था। लेकिन इस बार डिफरेंस ये था कि ये दोनों बर्ड्स आपस में नहीं टकराए। ना रिमेनिंग lines of the paragraph, the myna flew on and reached its perch, but the crow tried to pull up in mid-air and turn back. In the second that it took the bird to do this, the cobra whipped. Whipped means back suddenly, वापस आना, his head back and struck with great force. His snout, snout means nose and mouth of an animal. जो नाक और मुंह होती है ना एनिमल की, उसको snout बोलते हैं। Thudding against the crow's body. So the remaining paragraph means, the myna flew back to its shelter. myna वापस आ गई अपने shelter पे, अपने जहाँ पे वो रहती थी. But the crow tried to continue the fight in the air and come back. In the second trial, the cobra also moved suddenly and attacked the crow with full force. अब second दूसरी बार कोबरा भी मूव करा, थोड़ा सा कोबरा ने भी मूव किया और उसने भी क्रो पर अटैक किया पूरे फोर्स से। Paragraph number 16. I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. It fluttered about for a while and then lay still. The myna remained on the cactus plant, and when the snake and the mongoose returned to the fight, were wisely decided not to interfere again. The cobra was weakening, and the mongoose, walking fearlessly up to it, raised himself on his short legs with a lightning snap and the big snake by the snout. Now this means the author noticed that the bird falling 20 feet away. author ने notice किया bird, क्योंकि उसने क्रो पर हिट किया था, कोबरा ने क्रो पर हिट किया था पूरे फोर्स से, तो वो लगभग 20 फीट की दूरी पे जाकर गिरा. It kept shaking its body for some time, but then it became still and died. थोड़ी देर तक क्रो की बॉडी शिवर कर रही थी, शेक कर रही थी, हिल रही थी, लेकिन उसके बाद वो साइलेंट हो गया और क्रो की डेथ हो गई.
द माइना वॉज ऑन द कैक्टस प्लांट। और माइना कहाँ पर थी? वो कैक्टस प्लांट पे थी। एंड शी डिडंट इंटरफेयर इन द फाइट आफ्टर दिस। और ये सब देखने के बाद उसने इस फाइट में दोबारा से इंटरफेयर नहीं किया। द कोबरा वॉज वीकेंड एंड डिफीटेड। अब कोबरा वीक हो चुका था और डिफीटेड मीन्स हार चुका था। द मोंगूज अटैक्ड फियरलेसली। मोंगूज ने बिना किसी डर के अटैक किया। The cobra writhed and lashed about in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. The little fellow hung grimly on uh, until the snake had ceased to struggle. He then smelled along its quivering length, gripped it round the hood, and dragged it into the bushes. Now, these remaining lines means the cobra was weakened and defeated. अब cobra वीक पड़ चुका था, डिफीट यानी हार चुका था। द मोंगूज अटैक्ड फियरलेसली। और यही तो स्ट्रैटेजी होती है मोंगूज की कि जब स्नेक उसे वीक पड़ता हुआ दिखे तो वो बिना किसी डर के अटैक करता है। इट एग्जॉस्टेड द कोबरा विद हिज श्यूर एंड फास्ट अटैक मूव्स एंड फाइनली किल्ड इट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और आपने चैप्टर में पढ़ा भी है कि मोंगूज इतना प्रोवोक करता है स्नेक को अपने एक्शन से, अपने उछल कूद से, जिससे कि स्नेक भी अटैक करता है और फाइनली थक जाता है। थकने के बाद वो अपनी हिम्मत छोड़ देता है और उसी वक्त पर मोंगूज उस पर अटैक करता है। और यही यहाँ पर हुआ। इट कॉट द कोबरा फ्रॉम इट्स हुड एंड ड्रैगिंग इट। उसने कोबरा को उसके हुड से पकड़ा और उसको खींचता हुआ ले आया। पुश्ड इट इनटू द बुशेस। और फिर उसको बुशेस में यानी झाड़ियों में जाकर फेंक दिया, पुश कर दिया, धक्का दे दिया। द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर, द माइनर ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, हॉप्ड about, peered into the bushes from a safe distance, and then with a shrill cry of congratulations flew away. Now this means the myna fell down to the ground. अब myna ground पर गिर चुकी थी and hopping about she reached the bushes. और hopping मतलब कूद कूद के, hop करके bushes में पहुंची। गिविंग अ कंग्रेचुलेटरी हाई पिच्ड साउंड शी फ्लू अवे। उसने खूब जोर से आवाज़ लगाई कंग्रेचुलेशंस और उसके बाद मायना उड़ गई। दिस इज द एंटायर चैप्टर, दैट इज द banyan tree. Hope you all understand the chapter. Thank you everyone.